all of you and a very happy new year. Today, I hope I'm audible to everybody. Okay. So as you know, we have again shifted to the totally online education because of this sudden surge in the number of cases of COVID-19. So till the time we have online classes only, so please make it a point to join them regularly. The topic that I had sent you also, the topic that we have to discuss is poster making. What is a poster if I ask you? What is a poster? Have you seen posters? What are posters? Raise your hands and when you're given permission you can speak them. What's a poster? Yes. What is a poster? Mehek Deep, what is a poster? I had shared some videos also with you, so you should have gone through them. What is a poster? More pictures and less of writing, and whatever you write also, that has to be in the form of slogan. So I would share some important points about poster, the format of writing a poster. So for that I am going to share a screen with you. So what is a poster? A poster is a very useful means of making an announcement or appeal, issuing a notice, advertising a product, or bringing about awareness on any issue of public interest. So what is the basic aim of writing a poster? When you want to announce something, when you want to make an appeal, okay, it is we've done notices, we have done advertisements, so it is an amalgam of notices and advertisements. Okay, you want to bring in awareness on any issue of public interest, then you design a poster for that. So what are the uses of making a poster? It is always visually very attractive. This is very, very important. Posters are meant, they have a visual appeal. They are visually very attractive and easily readable from a certain distance. Please move your mic for the time being. Only when you are asked a question, then you can, turn them on. अदरवाइज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। अगर आप दूर से भी एक पोस्टर को देखते हो तो वो दूर से भी पढ़ा जाए, ठीक है, इतना आपको बोल्ड उसमें लिखना होता है, ठीक है। सो इट इज इजीली रीडेबल फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस। इट इज यूजुअली पुट अप ऑन नोटिस और बुलेटिन बोर्ड्स। जैसे हम नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाते हैं वैसे हम पोस्टर्स भी लगाते हैं, एंड दे आर इवन पेस्टेड ऑन वॉल्स। ऑल्दो defacing walls with posters or graffiti is not a healthy practice. Posters are also extensively used by political parties, religious organizations, आपने देखे होंगे जगह जगह posters लगे होते हैं, filmmakers, advertisement agencies, NGOs, government departments like the Public Relations Department, Health and Family Welfare Department, Education Department, and Environment Protection and Conservation Agencies and groups, etc. तो ये कोई भी poster लगा सकता है, ठीक है। Normally they are pasted on, they are put up on notice boards or bulletin boards, and we see them on walls also, although this is not a healthy practice. What is the focus? Essentially a very brief communication with a compelling visual. What is compelling? What do you mean by compelling? Compelling visual. It is a brief communication with a compelling visual. In this, yes, something which grabs the attention of the, of the person who is seeing the poster. Okay, and a powerful message. So it gives a very powerful message. It is always prepared with a particular target audience in mind. It very clearly mentions the theme or the topic, the schedule of an event, if it is about an event, किसी event के बारे में तो उसका schedule पूरा होगा, और उसका theme वो clearly mention करता है, and the occasion for it. Although you don't give a heading for it as such, मगर theme mention होता है उसमें. It is usually an appeal for the awareness or support, help or action, a warning or a caution. Often a poster takes the form of an invitation, like posters for carnivals, fates, ठीक है, different, अगर fates होते हैं तो fates के लिए भी हम poster लगाते हैं, fashion shows के लिए, concerts के लिए, sales के लिए, exhibitions के लिए, cultural programs के लिए. So lettering कैसी होती है इसकी? Although visuals are not part of the testing objectives, they are a great help in enhancing the overall impact of a poster. आपने देखा होगा विजुअल अपील कैसे बनेगी अगर उसमें कोई ड्राइंग होगी, ठीक है, तो they help in enhancing the overall impact of a poster. Therefore, it is recommended that we use simple visuals
and an aesthetic layout for a good poster. Students have the freedom to use any style and size of lettering. ठीक है, जो आपके अल्फाबेट्स, जो आप लेटर्स यूज करते हो उसमें, ठीक है, जो आप लिखते हो, जो स्लोगन्स लिखते हो, वो किसी भी स्टाइल और साइज में लिख सकते हो आप. ठीक है, बोल्ड, नॉर्मली हम बोल्ड साइज में लिखते हैं उनको. सो लेआउट, आइडली वन फुल पेज शुड बी यूज फॉर राइटिंग अ पोस्टर. ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में जब कर रहे हो तो पोस्टर के साथ ही बीच में खिचड़ी बना दो, राइटिंग सेक्शन की लेटर भी वहीं शुरू कर दो. नो. सो इट इज बेटर इफ यू यूज अ फुल पेज फॉर राइटिंग अ पोस्टर, बट इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन अ स्प्रेडशीट ऑल्सो. सो नो वी गेट पेजेस. ठीक है, आपको तो आंसर शीट मिलती है जो पूरी, तो उसमें आपने पूरा एक पेज को डिवोट करना है इसके लिए. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट योर पोस्टर इन अ बॉक्स, लाइक यू पुट योर एडवर्टाइजमेंट्स, योर नोटिसेस इन अ बॉक्स. सिमिलरली पोस्टर्स ऑल्सो हैव टू बी पुट इन अ बॉक्स. तो इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता बच्चे. इट हैज नो फिक्स्ड फॉर्मेट. हाउएवर इट मस्ट इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग पॉइंट्स. और वो पॉइंट्स क्या हैं मैंने आपको बताया. उसका थीम क्लियरली मेंशन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, कोई इवेंट है किसके लिए है, कोई ओकेजन है, एंड देन date, time and place in case it is about an event, a message of appeal, awareness, caution, warning, invitation. ठीक है, एक मैसेज आपने देना है, स्लोगन की फॉर्म में एक मैसेज देना है आपने. ठीक है, we'll discuss certain samples also. एंड देन कैची स्लोगन्स एंड कैप्शंस. ठीक है, कुछ कैप्शंस और स्लोगन्स आप नॉर्मल जैसे अपने आंसर्स लिखते हो, ठीक है, प्रोज फॉर्म में, वैसे नहीं लिखना है इसमें. यू हैव टू यूज कैची स्लोगन्स एंड कैप्शंस. एंड देन नेम ऑफ द इंडिविजुअल, जो इशू कर रहा है. अगर कोई इंडिविजुअल इशू कर रहा है पोस्टर को तो उसका नाम नीचे आना चाहिए. इफ इट इज सम ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इशूइंग एंड इशूइंग द पोस्टर, देन दैट नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी क्लियरली मेंशन टुवर्ड्स द एंड एट द बॉटम. ठीक है, so let's discuss some sample posters. This is about female feticide. Why call woman evil who gives birth to kings? ठीक है, this had been said by Guru Nanak Dev Ji. Did you know? अब देखो यहाँ पे did you know को उन्होंने कितना कलरफुल और बोल्ड लिखा है. ठीक है, over 10 million female fetuses have been aborted in India in the last 2 decades. Let girls be born and bloom. Again, you can see the font of this, born and bloom. Okay, so you can use any style and size, but you have to use slogans, catchy slogans and captions. Don't determine the sex of unborn babies. It's a punishable offense. Okay, female, let's not rub her out. Stop female feticide. Save the girl child. So this has been issued by Department of Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. So name of the issuing organization, it always comes at the bottom. Okay, so यहाँ पे आप let's look at another example. Drug addiction. Life is short. Do not make it shorter. Say no. तो देखो no के बीच में कितना कुछ लिखा हुआ है, आप ये देखो. Say no to alcohol, violence, drugs, fear, abuse. So all these things have been written in within no. ठीक है, तो ये उसको ऐसे डिजाइन किया गया है. No, say no to drugs. The first time, always. Break drugs before drugs break you. ठीक है, drugs, no way. Drugs kill millions of youth worldwide, ruin families, careers, health, relationships, turn promising youth into criminals, cause death and destruction. ठीक है, तो आप यहाँ पे ये visual भी देख सकते हो, injections and things like that. You can see syringes and all. ये आप देख रहे हो, ये the people who use drugs, they use this. So say no, यहाँ पे इसको cross किया हुआ है. Shun drugs. What do you mean by shun? What is shun? Shun drug. To, yes, to leave, to boycott. Yes, for yourself and for your loved ones, for once and for all. For support and guidance, contact de-addiction task group 29 Civil Lines, Roorkee. तो ये कहाँ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये इशू किया है? de-addiction task group है. ठीक है, so the name of the organization comes at the bottom. Okay, then another one is save environment. Ozone is depleting, polar ice is melting. So look at this tree. Amazon forest is decreasing, earth is cooking. ठीक है, वो ट्री के बीच में कितना कुछ लिख दिया है, फ्यूचर, रीयूज, रिसाइकल. ठीक है, ग्लोबल, जनरेशन,
ठीक है, ये सब कुछ, ऑक्सीजन, all these things have been written here on the tree. Save environment, save life. Here's what you can do: cut car use public transport, insulate your home, reduce or stop use of AC, plant trees, spread awareness, save the earth. We have nowhere else to go. Okay, so here you can, make drawings, different pictures. Okay, another one, fourth is eye donation. I am an eye. So very easily you people can draw an eye. Never ever think of burning me. Don't bury me. I outlive the deceased. Who are the deceased? Deceased कौन होते हैं बच्चे? What do you mean by deceased? Yes. Yes, dead. I outlive the deceased. I can bring light to someone's life. Let me live, gift me, and light up another life. No, so as I told you, captions and slogans. This is what makes up a good poster. And visually, you have to make one or two drawings. Over 25 lakh eye donations are required, but only 25,000 people donate eyes. So after you die, donate your eye. For further information, call 1919 or visit nearest iBank or email us at idonations@xxx.org. Okay, so this is about the posters. I would share something else also with you, but let me just discuss first. Let me go back to you people now. There are students who have joined very late, so it is my request to please join in time, because we've already discussed posters, we've discussed the samples, we've discussed the important points, and while I'm sharing the screen, I'm not able to see anyone, so it is difficult for me, no, it is not even possible for me. So if I'm sharing my screen, it is not possible, as I've told you earlier, it is not possible for me to see anyone. I've removed him. So बच्चे please time पे join किया करो आप. No, otherwise it creates a lot of disturbance. And also, okay, Joy. So we've already discussed the posters. I would share a screen with you, and I would share certain other important points also. If there is any confusion, you can ask me. Anybody, because I would be sharing an assignment in the next class, when we would have only when you've completed your assignment, and you would be sharing your presentations here. The screen with you about this topic. हाँ जी बोलो. हाँ, आप यूज कर सकते हो, पोस्टर्स में यूज कर सकते हो. जैसे आपने देखा ही है कि रेड पेन यूज हुआ है, रेड कलर यूज हुआ है. यू कैन यूज, और इफ इन्वायरमेंट के लिए तो ग्रीन यूज कर सकते हो. फॉर पोस्टर्स यू आर अलाउड, यू कैन यूज कलर्स, कलर पेंसिल्स एंड ऑल. यस, यस, यू कैन यूज इफ यू आर नॉट. ओके, इवन ड्यूरिंग योर एग्जाम्स में भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है, बहुत ज़्यादा ही नहीं उसको फ्लैशी बना देना, कीप इट सोबर, बट यू कैन यूज कलर पेंसिल्स. Okay, so let me share another screen with you. And again, this is about poster making only. So what is a poster? Posters are basically placards displayed in a public place announcing or advertising something. They are notices, advertisements, and invitations. So I told you it's an amalgam of, we have done notices, we have done advertisements, we would be doing invitations later on. क्या हो गया बच्चे? What happened? So they are an amalgam of notices, advertisements, and invitations. They are all in one. So purpose we've done already. It is either to create social awareness. Those students who joined late, I had shared a different screen earlier. Now this is almost the same thing. So they're to create social awareness about issues related to current problems and needs, or to advertise, or to even extend public invitations and display notices. So this is the purpose. Drafting, they should be colorful, they should be attractive, and they should be tempting. So visual appeal, that is the most important point where that you have to keep in mind while designing a poster. They must be drafted carefully to attract the attention of the readers, excite their imagination, and influence their minds. They are read from a distance, so therefore you have to use bold, you have to write in bold. Do not give many details. ठीक है, so clutter नहीं कर देना आपने बहुत सारी details लिख के. थोड़े से catchy slogans और captions use करोगे, बहुत ज़्यादा नहीं आप. ठीक है, not much of a writing in a poster. Highlight only important issue or issues. Main feature आपको पता ही है, उसका layout है. ठीक है, visually attractive. ये layout है इसका. कैसे layout में क्या है, क्या क्या आएगा? It should be visually attractive. Title should be very suggestive or catchy.
यूज स्लोगन और शॉर्ट वर्ड्स और जिंगल, स्केच और सिंपल ड्राइंग। सिंपल ड्राइंग सभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स, ठीक है, बीच में बोल्ड, बीच में स्मॉल, ऐसे आप अलग अलग साइजेस के यूज़ कर सकते हो, अलग अलग फॉन्ट साइज यूज़ कर सकते हो, प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग एक्सेट्रा। कंटेंट्स क्या होंगे इसके, क्या क्या आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं जब आपके बीच में लिखना क्या क्या है, थीम और सब्जेक्ट मैटर, डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स एसोसिएटेड विद द थीम, एसेंशियल डिटेल्स आपको पता ही है, ये पहले भी बताया मैंने आपको, इफ इट इज अबाउट एन इवेंट देन इट शुड मेंशन, यू हैव टू मेंशन टाइम, डेट एंड प्लेस, वेन्यू, then name of the issuing authority, organization, or if an individual is issuing the poster, then you have to mention towards the end, write the name of the person also. Expression, आपने complete sentences नहीं लिखने हैं, आपने phrases use करने हैं, slogans use करने हैं, persuasive language use करनी है. Creativity in terms of content and design, overall organization and sequencing of the matter. Sequencing बड़ी important है, किस style से आप उसको organize करते हो. And word limit is usually 50. So this is about a poster. ठीक है? Followed? Yes or no? So when I share some videos with you or some PDFs with you, ठीक है, कोई भी टॉपिक मैं करवा रही हूँ उससे पहले मैंने आपको वीडियोस भेजे हैं, तो वो आपने वीडियोस देख के आना है, ठीक है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है भेजने का आपको अगर आप इफ़ यू डोंट गो थ्रू दैम। कोई भी लिंक, कोई वीडियो मैं आपको भेजती हूँ, सो प्लीज़ गो थ्रू दैम, ओके। और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछो, अदरवाइज आई जस्ट मूव ऑन टू द अटेंडेंस पार्ट। असाइनमेंट आई वुड बी शेयरिंग इन गूगल क्लासरूम, हर बच्चे को गूगल क्लासरूम में हर बच्चे का होना ज़रूरी है, वहाँ पर आप सबमिट करोगे मगर हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, ठीक है, व्हेन वी मीट नेक्स्ट, ठीक है। अगर दो चार पोस्टर्स हैं तो आप एक दो दिन में बना सकते हो, ठीक है ना, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। सो डे आफ्टर टुमारो वी वुड मोस्ट प्रोबेबली मीट एंड वी वुड डिस्कस योर असाइनमेंट हेयर इन ड्यूरिंग द क्लास, ओके।